Good morning to respected principal ma'am, director sir, manager sir, our STNC sir, and all our seniors and juniors faculty of our school. Today, our new faculty of Mother St. Andrews English School, Mr. Rishabh sir, is going to give in-house training, and the topic of the training is Investing in Multilingualism in Classroom. First of all, I would like to congratulate Rishabh sir that he has taken a chance to give training on this topic, that embarrassing multilingualism in classroom. As we all know that different languages will be very much beneficial for the student in their study. नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले सेशन में भी एक बात हम बोले थे कि डिफरेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अगर हम बच्चों को पढ़ाएं, डिफरेंट लैंग्वेज मीन्स की वर्ड, डिफरेंट लैंग्वेज मीन्स कि बच्चों को जिस भाषा में स्टडी समझ है। जैसे कि हम पिछला बार बोले थे कि हम लोग के स्कूल में या बहुत सारे अभी तक के स्कूल में ये होता है कि आप बच्चों को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही चीज़ों को पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश भाषा में चीज़ों को समझने में असमर्थ होते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो इंग्लिश भाषा में उनके माइंड से स्किप कर जाती है। तो उस समय टीचर्स का ये दायित्व बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो क्या करें, ओवरऑल वो बच्चों को उसी भाषा में सिखाएं जिस भाषा में बच्चे सीखना चाहते हैं, यानी कि जिस भाषा में उनको समझ में आता है, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना, और अगर हम सपोज इंग्लिश लैंग्वेज का ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश भाषा में, और अगर सपोज बच्चा मेरी भाषा में उस इंग्लिश भाषा में पढ़ रही चीज़ों को नहीं समझ में आता है, उनको नहीं समझ पा रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पर टीचर का एनर्जी का वेस्ट है और टाइम का वेस्टेज है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स दैट टू टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द वे ऑफ दैट लैंग्वेज which they could understand। ओवरऑल अगर हम बात करें कि लैंग्वेज अगर इतना ज़्यादा मैटर करता है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो आज वर्ल्ड के सबसे बड़ा, वर्ल्ड का जो एजुकेशन चैनल है खान सर का, शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल नहीं बन पाता। खान सर ने प्रूव किया है कि भाषा मैटर नहीं करता, ठीक। जिस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, जिस भाषा में बच्चे समझ रहे हैं चीज़ों को, वो भाषा सबसे बेस्ट होता है, वो लैंग्वेज सबसे बेस्ट होता है। तो खान सर के बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखते हैं खान सर बहुत बार मगही भाषा का इस्तेमाल करते थे बच्चों को पढ़ाते हुए। क्यों? इसका सबसे बड़ा वही वजह होता है कि वो बच्चों से कनेक्ट होना चाहते हैं, और पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले कि आप बच्चों से कनेक्ट हो। अब बच्चों से कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि बच्चे किस भाषा में आपकी बातों को समझ पाते हैं ओवरऑल। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी भाषा का इस्तेमाल करें, आप सिर्फ उसी भाषा का इस्तेमाल करें, सिर्फ इंग्लिश का नहीं बल्कि हर एक उस भाषा का इस्तेमाल करें। मीन्स कि हिंदी का हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं ताकि बच्चे क्या हो, आसानी से चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि अभी मैं भी एज ए टीचर हूँ, एक टीचर हूँ, और मैंने भी ये पाया है कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाने पर ये प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे लोग उन चीज़ों को उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। और अगर इसी चीज़ों को अगर कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एग्जाम्पल्स, थोड़ा बहुत हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अगर हम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो हम शिक्षक का मेन मोटिव एक ही होना चाहिए कि बच्चों को सिखाया जाए। लैंग्वेज मोटिव नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करें बच्चों को सिखाने के लिए। भाषा का कोई भी हो, अगर आपसे बच्चा सीख रहा है तो आप बच्चे के लिए बेस्ट हैं। और अगर आप कितने भी बड़े टीचर हैं और अगर आपकी भाषा से, आपके समझाने के तरीके से अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो फिर आपका डिग्री या फिर आपका सर्टिफिकेट उस बच्चे के लिए कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि सिखाना मेन मैटर होता है, भाषा मेन मैटर नहीं होता। सो दैट इज द रीजन। इन सब चीज़ों के बारे में और एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल आवर रिस्पेक्टेड ऋषभ सर टू प्लीज कम एंड स्टार्ट योर सेशन। सो गिव अ बिग हैंड फॉर ऋषभ सर। Thank you so much, sir. First of all, a very good morning to all of you, respected director, sir, principal ma'am, and all the worthy teachers. Today, I got this golden opportunity to
give enough training on given topic, and the topic is embracing multilingualism in the classroom. So on this topic, I will talk about some of many few points, and that will be what is first of all what is multilingual. Then after we will talk about how we are going to solve this problem to every student, so that every student is going to learn multilingual languages. And third is how this will affect on the student. So we will cover all these top point one by one. So first of all, I would like to say what is multilingualism. So multilingualism is the ability to an individual, speaker or community of speaker to communicate effectively in 3 or more languages. तो सबसे पहला चीज तो ये कि व्हाट इज मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल है क्या? तो मल्टीलिंगुअल एक ऐसा काबिलियत है एक टीचर के अंदर या एक स्टूडेंट के अंदर जिसमें हम कम से कम 3 या उससे ज्यादा भाषाओं में बात कर सकते हैं। अब 3 या उससे ज्यादा भाषाओं में बात करने का ये मतलब है, इट मींस दैट कि देयर इज वन नेटिव लैंग्वेज, वन लोकल लैंग्वेज व्हिच वी ऑल नो कि दिस इज आवर लैंग्वेज, वी ऑल बिलोंग्स टू द प्लेस एंड वी speak the native language. And the second one is what we learn in school, that Hindi language, English, and one more, and how it will going to affect us, I will tell you this later. And the second multilingualism is the knowledge of more than one language by a person or within a social group. It assumes the ability to switch from one language to another in speech, in writing, in reading. तो कहने का मतलब ये है कि जो मल्टी लैंग्वेज चीज है वो एक पर्सन में इतनी सारी खूबियां कर देता है कि उसको बोलने में, उसके लिखने में, उसके बिहेवियर में, उसके रवैये में, हर चीज में बखूबी चेंज आ सकता है। या पढ़ने लिखने में, बोलने में 2 से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करना, जैसे हिंदी, इंग्लिश और तमिल में लिख रहा है, पंजाबी में लिख रहा है, उर्दू में लिख रहा है ना। एंड ये तो माना जाता है कि आवर कंट्री इज फुल ऑफ लैंग्वेजेस, कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो फुल ऑफ लैंग्वेजेस है, कि हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेज है। तो व्हाई टू कंजर्व योरसेल्फ एट वन लैंग्वेज, व्हाई टू जस्ट कंजर्व योरसेल्फ एट जस्ट वन लैंग्वेज, वी शुड आल्सो स्प्रेड दिस, वी शुड आल्सो नो अदर लैंग्वेज। नाउ I will talk about few points why this multilingual is important, where it come from. I will talk about these points. So first one is a person who can speak multiple language is known as polyglot or multilingual. क्या person who can speak a multiple language, कि जो आदमी एक से ज्यादा और 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, उस आदमी को या तो polyglot कहते हैं या multilingual कहते हैं। इसका हिंदी जाने तो बहुभाषिक बोला जाता है उनको। Now the third point is what NCF say about multilingualism. The main board of CBSE, what they say about multilingualism, they say about English in India is a global language. We all know that English is a global language. Whether we go in a school, everyone say that you should know English, you should know English. English is a global language in a multilingual country, multilingual context. 22 languages recognized by Constitution, 1602 mother language, 3000 dialects. So sorry. So this is about our country. 22 languages recognized by Constitution. The main 22 languages are 1652 mother language, which we speak oftenly, which our country people speak oftenly. Monolingual, bilingual, and multilingual. These are 3 types: monolingual, bilingual, and multilingual. Monolingual, a person who can speak one language; bilingual, a person who can speak 2 languages; and multilingual, a person who can speak more than one language. They are called monolingual, bilingual, and multilingual. Facilitate the target language and use the mother tongue to acquire second language. So what we do to facilitate the target object, use the mother tongue to acquire second language in language development. It develops in the left hemisphere in human brain and also called a logical brain. ये जो लैंग्वेज है ये हमारे बॉडी में कहाँ डेवलप करता है, किधर डेवलप करता है, वह बताया गया है कि हमारे बॉडी में जो ब्रेन में एक हेमिस्फीयर प्लेस होता है ह्यूमन ब्रेन में, वहाँ पे ये लैंग्वेज डेवलप करता है। कि ये तब होता है जब हम उस चीज को करने का कोशिश करते हैं, उस चीज को बोलने का कोशिश करते हैं। नाउ टेल यू द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो एक जब भी कोई बच्चा नया जन्म लेता है, बेबी होता है, उसका जो स्टेप
करता है, 6 months आफ्टर बबलिंग जो बलबलाना स्टार्ट करता है थोड़ी थोड़ी तोतले से आवाज में, 1 year and 1.5 year after 1 word stage when they are start speaking 1 word like mama, papa, daddy, likewise something like that, and the second year after 2 word, new word, telegraphic speech, and preschool early childhood important or language development. So why I am saying all these strategies, it is because when the boys when the students are in their childhood, they can learn a many things, or whatever they learn in their childhood is always present in their mind for their lifetime. So the point is that whatever we want to teach them, we should teach them in their childhood. We should tell them about their multi-language. First of all, we all know that we have to learn our native language, our local language. First of all, we have to learn that thing. It is nowadays it is a very common thing. If I can say with you this point that nowadays it make that English is so much important for the school that school put pressure on students that you should speak English. आपको इंग्लिश आना चाहिए वरना आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे. But nobody talks about their native language. Nobody talks about nobody talks about their native language. How native language is important. How they are going to help in our future about native language. So and one more point is that the student and teacher both feel shy about speaking the native language. Student and teacher both. So why this happen? Why can't we express ourselves in our native language? Not all the time. I'm not talking about all the time, but sometimes we feel shy in speaking our native language in front of anyone, in front of someone who pretends to be the great knowledgeable person. We feel shy. No, it's not the point that we should feel shy. The main thing is it depends on the environment and it depends on the moment that where we are standing, what we are talking, what we are speaking about, and according to that we should shift our language. That yes, if we are in village we should talk in the native language, local language, but when we are in the school we should talk in that formal language or that polite manner. And when we are with friends, we can talk anything which relieve our body, anything we want. We can talk about that. So the point is, how is this going to help in their future? There is some minor point that it will help their confidence, or definitely it will help their confidence. Their confidence level will go up to the high level. Now if I will talk about how to children achieve multilingualism, that कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन है, जो स्टूडेंट है, उनको मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे अचीव किया जाए, वो इस चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं, उस चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं. So now I will tell the first point is elite language learned in a formal setting through planned and regular instruction as in a school system. Formal जो भाषा बच्चों को विद्यालय में सिखाया जा रहा है, it means target language. and वो जो भाषा है that is target language, जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि that will help in their future, and we make that target that the boys or the girls should learn that language in a very good manner, in a very nice manner. So that's the main point. And the second is neighborhood. Here the language is acquired in a natural setting, acquired through the interaction with people speaking different languages. It acquired through environment or theoretically informed system. तो ये जो बताया गया neighborhood में, ये बताया गया कि here the language is acquired in a natural setting. यहाँ जो language acquired होता है जब हम पड़ोसियों से बात करते हैं, अपने आसपास से बात करते हैं, तो natural होता है. We did not much think about that. We did not much remember. We did not much be in a formal manner. Whatever we say or there we say by our heart, and we did not much think about that. Or the interaction with people speaking different language, and it can be happen कि हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं with a different language. Suppose that if we go somewhere and some people come to us and we know their language, then we can connect easily with them. And if we don't know their language, then we
difficulty to talk with them, to communicate with them, to know their feelings, what they are here, what they are doing here. So it will be more difficult for all of us. It required through environment, and that thing is required through environment. How in which place we are talking about, what was the reason of that speaking, that conversation. That is the main important point. A theoretically informal system, and we can say that it is an informal system because when we are in a school, when we teach a student to speak language, that obviously should be in a proper manner, in a formal manner, that whatever we should speak in a school, that will be in a polite manner, that please sir, I want this sir, please give me this sir. So this will be a format, and when we are talking with the neighborhood outside the school, that mostly depend on the environment. What I am talking about is the informal system. We can openly speak anything, or we can openly say anything, whichever language we know, and that will make the conversation easily, that will make the conversation better. Now moving forward, I would like to say that the home language first, or language, mother tongue and native language. So what is home language, first language, mother tongue and native language? If we take about home language, then we, as personally, if I will say about myself, as we know that I am from Bihar, we all are from Bihar. The first language we speak here is Maghi. Someone speak Maithili, someone speak Bhojpuri. So the home language, the local language we speak is that home language. The first language, whatever the first language that came from our mouth, our heart, and first language is actually that language which we grow in whichever environment, and whatever we see, and that will be our first language. Then come to our mother tongue. What will be our mother tongue? जहाँ हम रहते हैं वहाँ का भाषा क्या है, और जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, उस भाषा को हम लोग अपनाते हैं. देन नेटिव लैंग्वेज वी ऑल नो दैट, जो हिंदी हमारा भाषा है, वो हमारा नेटिव लैंग्वेज, वो हमारा राष्ट्र भाषा है. एंड मैं इस बात पर गर्व कर सकता हूँ कि दुनिया का एक ऐसा भाषा जो बहुत कम देशों को पता है, बहुत कम देश इसको बोल पाता है. ये इसलिए कि ये भाषा इतना मुश्किल है कि अगर कोई सीख ले तो वो पूरी तरह से एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाता है, एक होशियार आदमी बन जाता है. सो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड ऑलवेज बी प्राउड टू बी एन इंडियन. और ये जो हिंदी हमारी जो मातृभाषा है, ये हमारे भाल की बिंदी है. ये जो हिंदी है, जिसको हम लोग इतने गर्व से बोलते हैं, इस चीज पे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहूंगा मैं, बिकॉज नाउ डेज we can see that in India especially, many of our schools were pressurizing students to talk in English, to know English, and that is good. I am not saying that that is a bad thing. It is a good thing. We should know English, but the main point is that when we are started speaking English, we are forgetting our native language, जो हमारा मातृभाषा है, जो हिंदी हमारा मातृभाषा है. जब इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हम लोग अपने ही नेटिव लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं. आज के स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि क्या कहते हैं कि जब बच्चों को इंग्लिश सिखाया जा रहा है प्रेशराइज करके, पर उनको हिंदी नहीं आ पा रहा है. जहाँ पे वो इंग्लिश में 1 से लेके 100 तक काउंटिंग बोल पा रहे हैं, 1 to 200 काउंटिंग बोल पा रहे हैं, वहीं पे वो दे कैन नॉट स्पीक अ सिंपल 1 2 3 4, ये जो हिंदी वाला भाषा है वो नहीं बोल पा रहे हैं. where they can communicate with each other in proper English, but they cannot afford a conversation of a Hindi, proper Hindi. And that is the main thing we should also focus, that yes, it is okay to learn other language, it is okay to learn English, but it is the most important thing to learn Hindi also. क्योंकि आखिरकार जो हमारा पहचान है, जो हमारी मातृभाषा ने हमें दिया है, जो हमारी भूमि ने हमें दिया है,
वो चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए। एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई टू स्पीक और दैट लैंग्वेज, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू स्पीक हिंदी समटाइम। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड ओनली ट्राई टू स्पीक हिंदी, बट with the moving generation, with the moving environment, it should not be done that we forget our native language, हम हमारा ही भाषा बोल जाए और इंग्लिश को इतना अपना ले, बाकी लैंग्वेजेस को इतना अपना ले कि अपना भाषा ही भूल जाए। तो अपने भाषा को साथ लेकर सभी भाषाओं को सीखना, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी ही सीखना है तो सिर्फ हिंदी सीखकर एंड वही इंग्लिश बैठ जाए। नो, वी शुड we should always open our feather to learn everything, to fly wherever we want, कि हमें अपने पंख हमेशा खोल के रखने चाहिए कि जो भी मिले, जो जिस भी चीज को हमें बोलना हो, जिस भी चीज को हमें समझाना हो, उसको अपना पाए, उसको बोल पाए एंड उसी चीजों में फंसे ना रहे, तो आगे कुछ ना कुछ सीखते जाए। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा चीज है हम उसी को छोड़ दें। नाउ मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू say that NCF says every child is a multi-language, or the CBSE format says that कि every child should be a multilingual child, कि सभी बच्चे को जिनको हम पढ़ाते हैं वो multilingual आना चाहिए। The original language of person group or speaking is known as their first language or mother tongue. Primary school education must be covered through at home language. Care must be taken to honor and respect the child a home language mother tongue। और ये जो चीज है जो मैंने अभी बताया, और दैट इज द सेम थिंग व्हिच इज आई एम गोइंग टू से कि केयर मस्ट बी टेकन इन ऑनर एंड रिस्पेक्ट द चाइल्ड होम लैंग्वेज। इट शुड बी ऑलवेज देयर टू रिस्पेक्ट आवर चाइल्ड लैंग्वेज, आवर मदर लैंग्वेज। विथ लर्निंग अदर लैंग्वेज वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट आवर मदर लैंग्वेज। सी एट प्राइमरी स्टेज चाइल्ड और एट प्राइमरी स्टेज चाइल्ड लैंग्वेज मस्ट बी accepted as they are with no attempt to correct them। When boys are in a junior class, when boys are in their primary stage like 6 or 7 years, we started forcing them कि please speak in English, पिताजी को डैडी बोलो, माँ को मम्मा बोलो। So it is not good, ये सही नहीं है, क्योंकि at primary stage we should free them, हम लोगों ने खुला छोड़ देना चाहिए। तो whatever they want they can speak, they should first know their native language। हम लोगों ने फोर्स नहीं करना चाहिए उन 5-6 सालों में नर्सरी 1-2 क्लास में कि हाँ यू शुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, आपको बोलना ही चाहिए। हम लोग मार के और क्या कहते हैं स्कूलों में प्रेशर डालकर बच्चों से करवाया जाता है, दैट इज द बैड थिंग। नो, वी शुड नॉट डू दैट। एट प्राइमरी स्टेज वी शुड फ्री द स्टूडेंट दैट यू शुड स्पीक व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट, यू आर कंफर्टेबल विद, बिकॉज़ एट दैट टाइम दे मोस्टली इन अ हार्ड वे स्टार्ट स्पीकिंग। उसी टाइम वो बोलना शुरू करते हैं, उसी टाइम अगर उनके बोलने पे हम प्रेशर लगा दें, उनके बोलने पे हम रोक लगा दें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दे विल फील दैट प्रेशर एंड इट विल इफेक्ट देयर चाइल्डहुड आल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द डी पॉइंट, अ चाइल्ड एक्वायर्स हिज हर होम लैंग्वेज नेचुरली थ्रू स्ट्रीट नेबरहुड एंड सोसाइटल एनवायरनमेंट। सो what is my point of telling is कि a child learn its native language from their environment, from their surroundings। There are no school who teach anyone the native language, there are no school who teach anyone their main language, local language। They all learn that thing from their surroundings, from their environment। Moving on to the next point, children are born within it read language facility and they internalize an extremely complex system of language before they come to a school। So what is the point of telling this कि our children are born within the need language facility and they internalize an extremely complex system of language before they came to a school। कि जो बच्चे होते हैं जब वो स्कूल में आते हैं, जब वो छोटे होते हैं, तो उनका जो मेन लैंग्वेज होता है, उनका जो नेटिव लैंग्वेज होता है, वो तब तक वही सीख के आता है। और जैसे ही वो स्कूल में आता है वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग देम कि नहीं तुम इंग्लिश बोलो, नहीं तुम इंग्लिश बोलो, तुम ये लैंग्वेज बोलो, यू शुड नॉट स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज, तुम अपना लोकल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। एंड
child student who is just in a primary year student, they have to speak that language first or free them to speak their native language. So okay, now moving on to the next point, I would like to say that we should free our students, we should give them so much space that whatever language they are uncomfortable to speak with, they have to speak that. We should not pressurize them. Yes, we have to teach them that you have to learn so many languages, but we cannot force them that you only have to learn English language, कि तुमको इंग्लिश ही बोलना होगा. क्योंकि आजकल स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा ही मातृभाषा बोलते जा रहे हैं, जो है हिंदी. एंड दैट इज द मेन पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इन सम मिनट, दैट हिंदी एक ऐसा भाषा है जो बहुत सारे देशों में लोग चाह कर भी नहीं सीख पाते हैं, जो हमारा भाषा है. We should teach the student multilingualism. We should teach them the importance of multilingual. But the point I was saying is that when we have started teaching our student a multilingual language, they forget our native language. जब हम बच्चों को मल्टीलिंगुअल सिखाना स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश के लिए उनको प्रेशराइज करते हैं, तो जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, बच्चे उसको भूल जा रहे हैं. क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, टुडेज स्टूडेंट, दे कैन conversate with each other in English, but if we can say that कि proper हिंदी मातृभाषा में आप कुछ देर के लिए बोल कर दिखाइए, कुछ देर के लिए बातचीत करके दिखाइए, तो उन्हें उन चीज़ों में मुश्किलात आ जाती हैं, उन्हें उन चीज़ों में दिक्कत आ जाती है. कि आज के बच्चे, एक टुडे स्टूडेंट कैन टेल यू द काउंटिंग अप टू 1 to 1000, बट when we said them कि प्लीज 1 से 1000 तक गिनती बताओ, तो आप लोग थोड़े से लड़खड़ा से जाते हैं. So the point is कि first they have to learn the native language. हमारी मातृभाषा बहुत जरूरी है, and after that they should learn the other language. So on this topic, our very talented and respected sir, Arun sir, is going to give his views about this topic. So I would like to request him, sir, please come and throw some light on this topic. Thank you, sir. धन्यवाद आदरणीय ऋषभ सर, जिन्होंने आज की व्याख्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को आपके समक्ष रखा. जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत विभिन्न धर्मों का देश है और भारत में विभिन्न भाषाओं को बोला जाता है. जैसा कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया है और 22 भाषाओं में आप किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हमारे संविधान ने आपको अधिकृत किया. अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि चूंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते यह बहुत ही जिम्मेदारी होता है कि हम किस प्रकार अपनी भाषाओं के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से बच्चों में समग्र विकास करने का प्रयास करें. समग्र विकास के लिए यह नितांत जरूरी है कि हम बच्चों की भावनाओं को समझें. बच्चे किस भाषाओं में अत्यधिक अभिरुचि रखते हैं और हमारे शिक्षण देने की जो माध्यम है वह ऐसी होनी चाहिए जो अधिक से अधिक बच्चों के अंदर में भर सके. तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों की स्थिति को जानते हुए, बच्चों की भावनाओं को जानते हुए, बच्चों के अंदर में समग्र विकास हेतु जिन भाषाओं का नितांत जरूरी है, उन भाषाओं को जानते हुए, उन भाषाओं की वृद्धि करते हुए शिक्षा का प्रसार करें. या ऐसा नहीं कि जैसा कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश पाश्चात्य देशों का देन है. इंग्लिश आज मुख्य रूप से इंग्लिश जो है वह एक लिंक लैंग्वेज के रूप में हमारे देश में जाना जा रहा है. लेकिन क्या जिस समय हमारे देश में इंग्लिश नहीं था तो हमारा देश समग्र विकास नहीं करता था? यह देश भारत जो है वह कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और सोने की चिड़िया जब कहलाता था उस समय कोई इंग्लिश नहीं हुआ करता था. स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में जो सुनिपुण व्याख्यान किया शिकागो के सम्मेलन में,
तो वहां के जितने भी पाश्चात्य देश थे वह दांत को उंगली दबा दिया और कहा कि यह वह देश है जो सभ्यता संस्कृति का जन्मी माना जाता है, यह वह देश है जो पूरे विश्व को सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाया। तो यह बहुत जरूरी है कि हम सभी भाषाओं को आकलन करते हुए, सभी भाषाओं को निरंतर ध्यान रखते हुए सभी भाषाओं में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह बहुत जरूरी है कि जैसा कि आप मालूम होगा कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में मुख्यतः भोजपुरी और मैथिली और एक मगही भाषा और इसके पश्चात हिंदी की प्रावधान है। तो यह दायित्व है कि जिस भाषाओं के द्वारा, जिन माध्यम के द्वारा हमारे बच्चों में शिक्षा का समग्र विकास हो, उन स्थिति को लाना और उन चीजों को सहायक सिद्ध करके शिक्षा का प्रसार करना, यह हमारा दायित्व है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी शिक्षक अपने बच्चों के अंदर कोई भावनाओं को आकलन करें और भावनाओं को आकलन करने के पश्चात आप यदि उस विभिन्न भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करेंगे तो निश्चित तौर पर ज्ञान का प्रसार होगा। जैसा कि हमारा देश जो है ग्रामीण प्रधान देश है और ग्रामीण प्रधान देश में जो देहात के क्षेत्र में जो होता है वह वहां का जो है लोकल लैंग्वेज ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब वहां पर हम जाए, किसी बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी होगा और उसके जगह पर जाकर हम सीधा डिस्क्राइब करना शुरू कर दे तो वह निरर्थक हो जाएगा, वह अर्थहीन हो जाएगा और वह यही हाल होगा कि हम ऊपर बोलते जाएंगे, डिस्क्राइब करते जाएंगे, वर्णन करते जाएंगे और बच्चा को ऊपर से उड़ता जाएगा। तो हमें यह जरूरी है कि हमें उस जगह पर तोड़ना पड़ेगा कि देखो बेटा, यह प्रकाश से दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकाश और संश्लेषण। और तब प्रकाश को आप जिस आधार पर, जिस भावनाओं के द्वारा, जिस चीजों के द्वारा आप उसको डिफाइन करते हैं, आप उसको समझाते हैं और जिस भाषाओं का प्रयोग करके अपनी ज्ञान की भावनाओं को बच्चे में भरते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए। क्योंकि सीबीएसई के मानक के आधार पर जो टॉपिक्स है, यह जो चीज है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के समग्र विकास के लिए सभी भाषाओं को एक आकलन करें और सभी भाषाओं में समन्वय बैठाते हुए हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तभी जाकर क्या होगा, शिक्षा का जो एक भावना, शिक्षा का जो मानक स्थापित किया गया है, हमारे देश को विकास करने का जो भाव रखा गया है, तभी जाकर उसका पूर्ण रूप से निष्पादन हो गया, पूर्ण रूप से वह पूरा होगा। जैसा कि आप जानते होंगे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी से अभिभाषण किया था और तब हमें फक्र से लगा कि किसी प्रधानमंत्री ने जाकर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के द्वारा अपने देश की पहचान बताया। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी से जिस तरह से उद्घोषण किया तो लगा कि भारत अपनी अस्मिता को भूला नहीं और अपनी अस्मिता को पहचानने के लिए, अस्मिता को लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने अंदर की भावनाओं को परखें, अपने अंदर की चीजों को जानें और यह अंदर की चीजों को तभी जाना जाएगा जब हम विभिन्न भाषाओं को सही ढंग से आकलन करके उनमें समन्वय बैठाकर हम अपने क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसरित होंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी भाषाओं के बीच में आकलन करें और तभी जाकर हम एक आइडियोलॉजी, एक आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आज के रिसोर्स पर्सन आदरणीय निशंक सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. What a lovely speech and how much point he said to us so that we can think and learn about that. And the first of all, that we should always remember the greatest of our country, the greatness of our country, how we, for what we are popular and how should we preserve that.
immigration are becoming more and more multicultural and multilingual. Though all languages have the same function, there is a common idea that some languages, such as countries' official languages and international languages like English, are better and more useful than others. This has an impact on the emotions that children with migrant parents might feel towards the official language and the languages spoken at home, often leading them to be ashamed of their home language because they feel that it's not as important as the majority language. If children refuse to learn and speak their home language, parents may feel discouraged and decide not to speak to their children in their native language. Sometimes parents think that using their native language at home might make it more difficult for the children to learn their official language spoken at school. The attitude that school and teachers have towards home languages is crucial. Sometimes teachers are worried that immigrant children might not learn the official language quickly enough. They might also be worried that other children feel left out if immigrant children talk to each other in their home language. For these reasons, some teachers may ask students to speak only the majority language at school. Although it is important to promote learning of the official language, it should be strongly emphasized that all languages are important. If the school doesn't actively promote all languages, students can believe that the language spoken at school is more important than the home language. Teachers can promote multilingualism by using approaches such as translanguaging and language awareness. Translanguaging is a teaching approach that encourages students to use different languages in class. It works at its best when both the teacher and the students know the same languages. In this case, pupils can be asked to discuss a topic in one language and then write about it in another language. Even teachers who can only speak one language can use translanguaging. In this case, they become co-learners and encourage students to use their home language in class, even if they can't speak the language themselves. This way, pupils are allowed to express their ideas not only by using the majority language, but also by using other language tools they have available. Okay, that's all for the from the video. I hope you all learned many things from this video. So, continuing our in-house training, I would like to say now the main thing. We have discussed many things. First of all, we have discussed what is multilingual. Then we discussed how we should teach our student multilingual. Then we discussed we should teach our student multilingual, multinational languages. But with that, we should also proud on our native language. We should also learn the first thing is that our native language. Now, moving on to the next, I would like to share something that how this is going to affect on a student's career, how it is going to affect on their career. And before that, I would like to share something that how in a classroom we can do some activities so that our student, our very dear boys and girls should learn many languages. So first of all, we can talk with them in many languages. Then after, whenever we teach them, in between we can use other language. Then after, we can make an activity like skit activity, like conversation activity, like a funny thing that will help them in learning new language with no pressure. We can arrange an activity. We can say them to listen new songs, to watch multi languages movie. And the best thing is that why I am saying music and movie, because we know very much that music and movie attract a student. In fact, music and movie attract a person very much, and they learn that thing about music and movie very fastly. So I beg your pardon, sorry. From that point of view, I would like to say that if they will watch multinational languages movies, they will hear other languages
they will learn that thing faster. If I would say my experience that I started watching many movies in different languages, and that helped me a lot to learn many languages. And it is a very important thing if we teach our student in this manner that it will not affect their mind, it will not give some extra pressure on them, then that will be surely beneficial for them, because these all are an outside activity, because the first majority for them is learning, and the first majority for them is to gather knowledge, to study. So these are the extracurricular activities, and on these extracurricular activities we have to do in a good way, we have to do in an entertaining way, so that they also learn the thing and they did not feel pressure of doing that. Okay, now I would like to say that how this is going to help them in their future. So in their future, suppose that whenever they get graduate, when they are starting finding job, they will go in many places in our country, in other country, and wherever they go, they can feel safe by knowing their language. Because if we don't know the language where we are living, then it will be more difficult for us to know and to gather information about that place. If I would have to share an example, I would share my example that when I was studying in class 6, I went to a science school that is in Haryana, and there I found that they are speaking some other language, their native language in Haryana and Punjabi, and we some students are from Bihar, and that is making more difficult for us to understanding them, that is making more difficult to us to get conversation with them, and that is difficult making more difficult to us to make some friends, because we don't know their language, and it is very important to know their language so that we can conversate. Actually we can conversate, because if we want to share our emotion, if we want to share our feelings with someone, we have to know their language. If we don't know their language, then we just have to tell them, when we just have to speak, and they can't feel that by heart. But when we know their language, when we get comfortable with each other, whatever we say, they can feel that from their heart. So the point is it is very much important to learn many languages, so that in future wherever we go, wherever field we go, wherever sector we want to do job, that will not make difficult for our students, that will not make difficult for them in their future, because we are here to make their future. That's our main agenda. We are here so that they be a greatest person, and they can be a future of our country, that is India, and they take our country on the golden place. So the point is if we started teaching them multilingual languages, then they will be more safe in their job facilities. So moving next, one more thing I would like to say, that multilingual is important for student brain, student mind. It is very much important for their mind. It is very much important for their coming days. It is very much important. If one student will try to speak in many other languages, and that will be recycle his brain, that will be freshness his brain. अगर एक ही चीज को हम
for our country, for our student. So that is the main thing. So what I would like to say that one more thing we can do, and likewise activity, what activity we can provide them. So I have tell you about movies, I have tell you about music, and now I will tell you about the card system. The card system is the main thing we should do. Now what is card system? So card system is like that कि there is one card in each classroom and we distribute them. कि suppose that today we want to learn the English language. Suppose that. So we all should have to speak in just English language. And if any person, any boy, any girl will speak in other language, they have to face that card. They have to take that card. And at the last of the day, whoever the card belong to whomever is getting some activity, is getting some topic, and they have to speak that about that topic in that language only. So it will affect them in a two ways. First is that with the fear of that speaking the topic, now we know about our student, the fear of that speaking the topic, they have to speak in the same language, which language we have decided for that day. They have to speak about that. And suppose that if they did not speak that language in a daytime, then they have to speak a topic, and that is the main important thing. They have to give speech for 5 minutes in the same topic. So that will be push up, that will build up their career, that will build up their language skill. Now the second activity we can do that we can gather our knowledge from all our countries, and we can give him small types of word. Likewise, if we say कि bye bye को adieu बोलना है in a French or in a Latin language, we can say bye bye to adieu, and that is the main thing we can say that. And we all know that multi-language, the person who can conversate with anyone with comfortably, and when we become comfortably conversate with anyone, when we know their language, when we feel comfortable in speaking that language, then we will be comfortable for that language. And it is a very important thing to know that we are comfortable to conversate with anyone with that language, because the language is the main important thing. We should know to share our feeling, to share our emotion, and without emotion, feeling, we are nothing. Or we all know that too. If suppose that if we went some place and there we did not know that language, and if we get in any difficulty, so how anyone can solve our difficulty when we can't speak their language? और जैसे likewise कि एक एग्जांपल मैं अपने लोकल एरिया का देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम जानते हैं हमारे लोकल एरिया में कुछ नेपाल के लोग आगे रहते हैं. Some Nepali people come here and live and do their study, and I see that they did not know our language, we did not know their language, and when we conversate with each other, we feel so much difficulty. When they went to market, I observed that when they went to market, they have to pick up the thing and they have to say that I want this. With a sign they have to say that I want this, I want this. They cannot speak properly, or they cannot ask for anything from a shopkeeper. एक दुकान वाले से वो किसी चीज के लिए खुल के पूछ नहीं सकते, because they don't know our language and we don't know their language. So how can we make a good relationship? How can we live with a peace? So they are living apart from us, कि वो हमसे अलग रहने लगते हैं. एक ही जगह पर जहाँ हम पूरे दिन रहना, पर लोग अलग अलग रहने लगते हैं. So that is the most important thing, why we should teach our student, why we should taught our student about the multilingual, and that is the main thing. We should taught our student about the multilingual, because that is going to help in their future, and that is the main thing we are here for. That is going to help in their future, and that will recycle them, that will make their mind fresh, or that will make more asset to their quality apart from a study. So it is very much important to know the multi language
apart from me, it will make them feel some consciousness to talking to us that we are all they are all speaking in Bhojpuri, and I being a person and go there and speak in English, and that will make them unconscious. So, and that is the reason we should know every language so that we can talk properly, we can know properly, and that is what this quote is saying. If we know the same language we are talking with the person, that will go to his heart, उसके दिल तक वो बात पहुंच जाएगा बिना पहुंचा. And language is that now in in 1, 2, 3, 4 we learn the definition of language, whichever thing we can make other person feel कि जो हम अगले इंसान को समझा सकते हैं अपने भाषा के द्वारा, that is language. And अगर हम कुछ बोल रहे हैं, if we are speaking something and सामने वाला इंसान उस बात को नहीं समझ रहा है, if he or she is not getting that my point, then what is the point of speaking? There is no point of speaking. जब उस तक हमारा बात पहुंच ही नहीं रहा तो फिर बोलने का कोई फायदा ही नहीं है. With all these things, with the benefit like creativity, that will make them creative, or critical thinking, they will start critically thinking, better communication, that will increase they are in better communicating where they can communicate with anyone in a good way. Cultural awareness, with knowing many languages, they will know about our culture, as we know that our country is so much of culture and values. They will know about that, and they will proud on our country. Confidence, the most important thing. If they will learn that language, they will build up their confidence. Their confidence level will be high, and the fast living and the foster living and equality appreciation. Equality appreciation means that the last and beneficial point is that equality appreciation means that if we go somewhere and we know that language, we can speak that language in a good way, and that will make equality between us. If you speak another language in front of another people, suppose that we went to Tamil Nadu, in front of Tamil people they are speaking Tamil language, and we went there as a Bihari and we started speaking Bhojpuri language, that will make some difference between us, that will make some discrimination between us. We cannot talk with each other. So it is very much important that learning multi-language, it will make equality appreciation. With all these points, I would like to conclude my talk with this point, and I hope that from my thinking, from my views, I hope you all have gathered some point, so that will help you in future, and we all in a group we taught our student a good way and a best way. So much, sir. I hope we all learned so much things from this session. Now Rishabh sir going to give some assessment. We all have done. We all have do the assessment after some time, and I hope that we all gain so much things from the session that Rishabh sir given to us.